हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 में हमने एस सर्कल के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एस टी एंड एस टी आर लूप्स, एस ई एस एंड एस डब्ल्यू सर्कल्स एंड वॉवल इंडिकेशन। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट विद एस टी लूप। A small loop written in the same direction as the S circle represents ST, called ST। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम एस सर्कल बनाते हैं उसी डायरेक्शन में हम एस टी लूप बनाएंगे। तो ये एस टी लूप कैसा, एक लूप जैसा, वो सर्कल था, ये लूप है। ठीक है, और ये हाफ ऑफ द स्ट्रोक पे कंप्लीट होता है। आप जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं सब में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हिस्सा ले रहा है, एक स्ट्रोक का आधा हिस्सा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। फास्ट, F above the line ST loop, then put the vowel on the first place of F after it. Missed, M stroke on the line with ST loop with light dot at the end of M on the third place of it. Must, M stroke ST loop on the line, light dash vowel on the second place. Honest, N ST loop above the line and light dash on the first place of N before it and light dot on the second place of N after it. Assist, S stroke ST loop above the line, first place vowel before S and third place vowel after S is used here. List, downward L ST loop and put the third place vowel after L. Invoiced, N stroke V through the line with ST loop. यहाँ पे ED SEED की साउंड के लिए क्या दिया गया है, ST loop। क्लियर है? थर्ड प्लेस वॉवल बिफोर N and OI diphthong on the first place of V is used here. Announced, N stroke another N stroke with ST loop above the line, put first place vowel before N and OW diphthong on the third place of second N before it. Stuff, ST loop with F on the line, put light dash vowel on the second place of F before it. Style, ST loop upward L above the line and I diphthong on the first place of L before it. Clear है? Steal, ST loop with L upward L through the line and heavy dot on the third place of L before it. Still, same outline with light dot. Stone, ST loop on the line with N consonant. Okay, and heavy dash on the second place of N before it. Stem, ST loop with M stroke on the line, light dot on the second place of M before it. Store, ST loop downward R on the line, heavy dash on the second place of R before it. Post, P on the line ST loop, heavy dash on the second place of P is used here after it. Based, B ST loop, heavy dot on the second place of B after it. Test, T ST loop on the line, light dot on the second place of T after it. Just, J ST loop on the line, light dash on the second place of J is used here. Adjust, J same outline above the line and put the first place dot on the first place of J before it and light dash on the second place of J after it. Suggest, S circle J ST loop on the line, then put the light dash on the second place of J before it and light dot on the second place of J after it. Fixed, F through the line K ST loop, light dot on the third place of K before it. Guessed और guessed दोनों का सेम आउटलाइन रहेगा. Gay on the line with ST loop and light dot on the second place of gay after it. Cost, K above the line with ST loop and light dash
on the first place of K after it. Waste. Way on the line ST loop and put the second place vowel on the second place of way after it. Rest. Upward R ST loop light dot on the second place of R after it. Haste. Upward H on the line ST loop heavy dot on the second place of H after it. Host. Same outline, only heavy dash is used here instead of heavy dot. Step. ST loop P on the line light dot on the second place of P before it. State. ST loop T on the line, then put the heavy dot on the second place of T before it. Stayed. Same outline, stayed, only D is used here. ST loop D. Stayed. ST तो बन गया as a loop and D, and put this heavy dot on the second place of D before it. Stage. ST loop J on the line and put the second place vowel on the second place of J before it. Stop. ST loop K above the line, then place the first place light dash before K is used here. Story. ST loop upward R heavy dash on the second place of R before it and light dot on the third place of R after it. Next is B part. The ST loop represents either a light or heavy final sound. वही जो मैंने अभी आपको बताया कि ST loop के लिए ST loop कहाँ लगेगा, उसकी heavy sound हो तब भी, light sound हो तब भी. कैसे? ST हो तब भी, SED हो तब भी. ठीक है, as in past. तो P above the line with ST and light dot on the first place of P after it. Paused. Same outline with heavy dash on the first place of it. Used. Y through the line से जाते हुए ST loop and heavy dash on the third place of Y is used here after it. Advised. D above the line V and ST loop. Put the first place vowel before D and I diphthong after V is used here. Refused. Upward R F ST loop on the line, light dot on the second place of R after it and U diphthong on the third place of F is used here. Disposed. D through the line S circle P ST loop and third place light dot on the third place of D after it and heavy dash on the second place of P after it is used here. Supposed. S circle P ST loop on the line and this is second place light dash before P and heavy dash after P is used here. Final S circle after ST loop is added as shown. अब हमने ST loop के बाद अगर S circle की साउंड आए, S की साउंड आए तो उसको कैसे सर्कल से रिप्रेजेंट करना है इसमें पढ़ेंगे. लिस्ट हमने बनाना सीखा ऊपर, ठीक है. उसी के साथ एक छोटा सा सर्कल ऐड कर देंगे तो वो क्या बनेगा, लिस्ट. पोस्ट, पी ST लूप ये सभी हमने करे हुए हैं, ठीक है. इसके साथ एस सर्कल ज्वाइन करना है. टेस्ट, वेस्ट, एडजस्ट, कॉस्ट एंड सजेस्ट, ये सभी एग्जांपल्स मैंने आपको विदाउट सर्कल ऊपर कराए हैं. उन्हीं के साथ एक स्मॉल सर्कल ऐड करने पर ये उसके प्लूरल वर्ड्स बन जाएंगे. क्लियर है. नेक्स्ट इज द ST लूप में बी रिटन इन द मिडल ऑफ अ वर्ड. अब मिडल में ST आ जाए तो क्या करेंगे, एज इन टेस्टिंग. टेस्ट किया ऑन द लाइन, करा था अभी, टेस्ट किया है ना. तो टेस्ट ऑन द लाइन विद NG. एडजस्ट, एडजस्टिंग, सेम एडजस्ट वाली आउटलाइन विद NG का क्या, स्ट्रोक. सजेस्टिंग, सेम सजेस्ट की आउटलाइन एंड NG का स्ट्रोक, NG का कॉन्सोनेंट. नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक. Upward R above the line, T, ST loop, then K. Heavy dot on the first place of R before it, light dot on the third place of T after it, and artistic, na, and third place vowel before K is used here.
शॉर्ट फॉर्म, अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एक लूप ही अगर हम बना देते हैं, जैसे हम सर्कल बना देते हैं फॉर इज एंड एज, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सर्कल की शॉर्ट फॉर्म्स, ऐसे ही इसमें क्या है, एक लूप अगर हम ऑन द लाइन बना देते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट, ठीक है, क्या वर्ड रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट। एम सर्कल एस टी लूप अबव द लाइन फॉर मोस्ट, एन स्ट्रोक एस सर्कल अबव द लाइन फॉर इन्फ्लुएंस, N stroke ST loop above the line for influenced, same outline on the line for next, ठीक है। ऑल का टिक हमने पढ़ा था, हैवी, ऐसे ऑफ का इसी साइड ऐसा ही बनता है, वो लाइट बनता है, ये ऑल का टिक हैवी बनता है, ठीक है। दो की आउटलाइन भी हमने पढ़ी है, अबव द लाइन बनती है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ऑल दो पढ़ा जाएगा अबव द लाइन, होल आउटलाइन अबव द लाइन रिप्रेजेंट्स ऑल दो, क्लियर है। ऑल का टिक एंड देन राइट, तो क्या पढ़ा जाएगा अबव द लाइन, and put the diphthong on the first place of R after it. Already, algetic, upward R, D, second place light dot after R, and third place light dot after D is used here. Whole outline above the line, क्योंकि all above the line बनता है, तो ये सभी outlines above the line ही बनेंगी. Always, algetic and ways. Heavy dot on the second place of way is used here after it. Almost, अभी most की यहाँ पे है दी गई है, तो एक तरह से क्या है, phrases हैं। Almost हमने दो फॉर्म्स को, शॉर्ट फॉर्म्स को इकट्ठा करके बनाया है, तो वो phrases हैं। Almost, algetic and most above the line. Also, algetic, लेकिन यहाँ पर upward L भी यूज किया गया है, and फिर then S stroke above the line and then put the heavy dash on the second place of S is used here, ठीक है। as fast as के लिए सर्कल, फास्ट पूरा जैसे हम बनाते हैं वैसे हमने बनाया, F ST loop and put the first place vowel after F and ST another circle join with ST loop for another S, ठीक है, as fast as, क्लियर है। नेक्स्ट इज इसका एक्सरसाइज है 31 जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ये डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस दी गई हैं, कॉस्ट और कॉज्ड, ये हम अलग अलग बनाएंगे क्योंकि बहुत रेयर चीज़ है ये कि आपको कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है। कॉस्ट, के एंड एस टी लूप अबव द लाइन, पुट द फर्स्ट प्लेस लाइट डैश on the first place of K after it, and caused KS circle D above the line, heavy dash on the first place of K after it. Next is STR loop, a large finer loop. अभी हमने ST loop पढ़ा जो कि एक स्ट्रोक के हाफ में बनता है, ठीक है, और पतला होता है। अब ये उस 2/3 पार्ट ले लिया जाता है, एक स्ट्रोक के 2/3 पार्ट तक कवर करता है जो लूप, और थोड़ा सा मोटा दिखता है बनने में, तो वो क्या कहलाता है, STR लूप, अ लार्ज फाइनल लूप। और ये क्या है, लार्ज है, सॉरी फाइनल लूप मीन्स कि एंड में ही आता है, स्टार्टिंग में आएगा तो हम लूप STR का स्टार्टिंग में नहीं यूज करते। इन द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड वी कैन नॉट यूज STR लूप, ऑलवेज we use STR loop in the final. In the final means at the end of a word it is used. Written in the same direction as the circle. S circle represents stir. ये कौन सी sound represent करता है, stir. Master, M stroke above the line with STR loop. It completes the 2/3 part of the consonant or a stroke, clear है, and put the first place vowel on the first place of M after it. Next is register, upward R on the line J with STR loop, second place light dot after R and third place light dot after J is used here. Faster, F above the line with STR loop, put the first place vowel on the first place of F after it. Poster, P on the line with STR loop and heavy dash on the second place of P after it. प्लेसिंग वही रहेगी वॉवल्स के हिसाब से, ठीक है, तो वो साउंड तो हमने कैच करना ही है कि कौन से
साउंड का स्ट्रोक है, तो उसी प्लेस पे हमने उसे बनाना है. मिनिस्टर, M stroke, N stroke with STR loop, and put the third place vowel before and after N. Light dot vowel is used here. Administer, D above the line, M, N stroke, STR. Put light dot vowel before D on the first place of D before it, and a third place vowel before and after N stroke, light dot vowel. Investor, N and V through the line with STR loop. Put third place vowel on the third place of N before it, and second place light dot vowel on the second place of V after it. Leicester, upward L on the line, STR loop, second place light dot vowel after L. Chester, Ch on the line, STR loop, and put light dot vowel on the second place of J after it. Rochester, upward R above the line, J, STR loop, first place light dash vowel after R, and light dot a second place vowel after J is used here. Coaster, K, STR loop, heavy dash on the second place of K is used here. Roadster, upward R, D on the line with STR loop, then place the vowel heavy dash on the second place of R after it. The STR loop is not used at the beginning of a word. मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ क्लियर कर दी थी. The S circle is added for such words as. अब इसमें भी S circle plurals आ जाएंगे. तो कैसे? वैसे ही STR बनाने के बाद, जैसे हमने ST बनाने के बाद S circle एड ऑन करना सीखा था, सिमिलरली STR बनाने के बाद S circle एड ऑन करना है. एज इन मास्टर्स, ये सब हमने किए हैं अभी. रजिस्टर्स, पोस्टर्स, इन्वेस्टर्स, तो सेम आउटलाइन बनेगी, ओनली एट द एस सर्कल फॉर इट्स प्लूरल फॉर्म. सो दिस इज 32 एक्सरसाइज, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में 31 एंड 32 एक्सरसाइज मिलेंगे. और इसके जो नेक्स्ट पोर्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेम चैप्टर के. ओके, आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. Okay students, thank you.